Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 25th lecture of the series of CPC. Let's see what is the difference between res judicata and estopple. First difference लिख लीजिए आप. Res judicata applies upon court and estopple applies upon parties. तो इसको लिख लो साथ के साथ. Write down. It applies on court and estopple applies on parties. अब res judicata applies upon the court in the sense it makes the court incompetent. It applies upon the court, it means that the court becomes incompetent to try the subsequent suit or the issue. When you say it applies upon the parties, these parties are not bound to take the pleadings in the court. It means parties are not bound to take the pleadings in the court. So these parties are bound to these. It applies on parties means these parties are bound to not to take the pleadings into the court. These parties are bound to not to take pleadings in the court. ठीक. तो estoppel का मीनिंग क्या हुआ? estoppel का मीनिंग है कि मान लो अगर आज आपने कोई रिप्रेजेंटेशन किया मेरे सामने with the intention that I believe on the truthfulness of that intention. You have made a representation or a statement. You have made a statement or representation before me with the intention that I must believe the truthfulness of that representation, and tomorrow I have altered my position on that faith. So tomorrow you are not allowed to turn back because it is doctrine of estoppel applies. estoppel 115 एविडेंस एक्ट. तो estoppel के अनुसार जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन किया उसके बेसिस पर किसी और ने अपने पोजीशन में ऑल्टरेशन कर लिया है तो अब आप अपनी बात से नहीं पलट सकते. तो इसी तरीके से promissory estoppel. Suppose I promise you today that tomorrow on Sunday I would deliver you something, and on believing of that you have arranged all the things, believing that that order is going to be delivered this time today. By this promise I am bound by the principle of estoppel, because if I not deliver on time then you will suffer. मेरी प्रॉमिस की वजह से आपने सारा अरेंजमेंट जो अदर अरेंजमेंट था वो कर रखा है. यू स्पेंड मनी ऑन दैट, प्लस आपकी मेंटल फ्रेमिंग भी होगी. बट लेटर ऑन इफ आई रिफ्यूज टू डिलीवर दैट देन आई विल बी बाउंड बाय द promise to estoppel. So in that way estoppel is basically where I do something or I say something and you believe it and you alter your position on that basis. If tomorrow I turn back from that, then I will not be allowed to do so. So estoppel is always कि मैंने आपसे क्या कहा था और फिर आपने अपना पोजीशन चेंज किया है कि नहीं, और कल अगर मैं उस बात से मुकरता हूँ, वापस करता हूँ, then I will be stopped from turning back, and therefore you will say that the estoppel binds the parties. Therefore estoppel से कोर्ट को मतलब नहीं होता. Court will apply the principle of estoppel, but estoppel binds the parties that you had said this earlier and now you cannot turn back to that. So parties as restrained from turning back. Parties are refrained from turning back. जबकि res judicata में it directly applies upon the court and it takes away the very competency of the court to try the suit. Then next difference is in res judicata the section 11 के condition to be fulfilled, और जबकि estoppel के लिए ऐसा कोई condition नहीं है. You can only talk about the section 115 of the Evidence Act, and res judicata is relates to section 11 of the CPC. Then next difference is there is something like constructive res judicata, but there is no express concept of constructive estoppel. Constructive estoppel जैसा कोई concept नहीं है. ठीक. Now next difference is estoppel is a rule of evidence. उस चीज का आप एविडेंस नहीं दे सकते जो आपने पहले कुछ और कहा था, और जबकि रेस जुडिकाटा इज a rule of procedure. Res judicata is considered to be rule of procedure
CPC, whereas the estopple is considered to be a rule of evidence. The next difference is estopple does not apply upon pure law और statute, और जबकि रेस जुडिकाटा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि रेस जुडिकाटा डायरेक्टली कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को ही बैन कर रहा है। रेस जुडिकाटा डायरेक्टली कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को बैन कर रहा है। सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर एप्लीकेशन ऑफ और नॉन एप्लीकेशन of res judicata does not apply. Then res judicata bars prevents the multiplicity of proceedings. Res judicata bars multiplicity of proceedings, और जबकि estoppel में आप कह सकते हो estoppel bars inconsistent pleadings, मतलब पार्टी ने पहले कुछ कहा और आप कुछ कह रहे हो, तो इसमें लिख लो आप bars inconsistent pleadings. It bars inconsistent pleadings. Then next difference लिखो, res judicata binds both the parties and estoppel binds one of the party. Now actually the res judicata binds the court and courts become incompetent, लेकिन इफेक्ट तो दोनों पार्टीज पे होगा। एक बार एक सूट में एक इशू कोर्ट में एक बार डिसाइड हो गया तो अगले सूट में दोनों में से कोई भी पार्टी उस इशू को रेज नहीं कर सकती। Once a issue has been raised by A in a suit and once decided, then in subsequent suit neither A can raise it nor the B can raise it, B opposite party. So you can say that it binds both the parties and it binds one of the parties. ठीक, तो 7 points हो गए। And no concept को evidence does not apply upon pure or statute bar inconsistent pleadings. अब इसमें यो लिखा है बार इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स, तो इसमें इस तरीके से लिखो बार मल्टीप्लिसिटी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। estoppel bars multiplicity and inconsistency of representation. Now write the 8th difference, that res judicata is based upon the public policy though equity and justice are also involved. Res judicata is based upon the public policy though equity and justice are also involved, whereas estoppel is purely a matter of equity and justice between the parties to the suit. Whereas estoppel is purely a matter of equity and justice between the parties to the suit. So public policy means what? There should be a certainty of law and all that. So res judicata is a much broader policy, और estoppel में दो parties के बीच equity and justice है कि तुमने पहले ये कहा था अब तुम उससे पलट नहीं सकते, तुमने पहले ये कहा था अब तुम उससे पलट नहीं सकते। तो रेस जुडिकाटा में एक बार सूट डिसाइड हो गया या इशू डिसाइड हो गया, then the public policy requires that there should not be uncertainty of law and unnecessary multiplicity of proceedings, and therefore दोबारा उसी इशू पे या उसी सूट पर सुनवाई नहीं होगी। तो वहाँ पर it is a more broader concept related to public at large, दो वहाँ पर भी parties involved है, but estoppel is mainly purely between two parties. I say something, you altered position, and now you will not allow me to turn back. Now you cannot also say that estoppel not related largely to public policy. Certainty of relations public policy involved है, लेकिन mainly it is between two individuals. So res judicata largely it relates to public policy. ठीक, तो res judicata largely involves the public policy. ठीक, so that's it for this topic. Now next question, when can be the plea of res judicata be raised? When can be the plea of res judicata be raised? बताइए। और देखो obviously it will be earliest, कोई भी plea है that would be earliest at or before the settlement of issues. अब बेस्ट तो है कि आप WS में रेज करो और या फिर सेटलमेंट ऑफ इशूज या उसके पहले कर लो,
अब बाद में रेज करोगे तो कोर्ट अलाउ करेगा कि नहीं? कोर्ट में अलाउ विद कॉस्ट, but it has to be raised at the earliest possible, or otherwise it can be raised at any stage of the proceeding, provided the cost be imposed, provided the court allow the amendment of pleading, and normally the court will allow. तो अगर आपने जानबूझ के भी डिले किया फिर भी कोर्ट अलाउ कर देती है, क्योंकि रेस जुडिकाटा को कोर्ट को पता है, और फिर भी अगर कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया then the decree will be void, and therefore the court will allow it at the any stage of the proceeding. Obviously अगर बाद में अगर क्लेम करते हो the cost will be imposed. तो इसमें एक सेंटेंस लिख लो, right? Right. It can be raised at any stage of proceeding provided the amendment of pleading was allowed. Provided the amendment of pleading was allowed. Full stop. The court can impose cost. The court can impose cost upon the plaintiff while allowing the amendment of pleading at later stage. ठीक, अब एक और क्वेश्चन लिख लो. Can the court raise the plea of res judicata suo motu? Can the court raise the plea of res judicata suo motu? बताइए. अब देखो, अब कोर्ट को कोई सपने तो आएंगे नहीं कि भाई पहले डिसाइड हो चुका है. अब फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कोई सूट पहले किसी और कोर्ट में फाइल हुआ था. इट वाज हर्ड एंड डिसाइडेड. नाउ टुडे यू फाइल द सेम सूट इन अ डिफरेंट कोर्ट. अब दिस कोर्ट विल नॉट बी नोइंग दैट दिस सूट हैज बीन ऑलरेडी बीन हर्ड एंड डिसाइडेड इन सम अदर कोर्ट. तो ये ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा? द डिफेंडेंट. तो जब तक डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा, हाउ विल द कोर्ट नो? और अगर डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज कर भी दिया तो रेस जुडिकाटा इतनी आसानी से नहीं लगता है. द पार्टी विल हैव टू लीड एविडेंसेस. पार्टी हैव टू लीड एविडेंसेस. पिछले सूट को प्रूव करना पड़ेगा कि इन द प्रीवियस सूट व्हाट वाज द टाइटल, व्हाट वाज द मैटर इन इशू, एंड ऑल दोज एलिमेंट्स, and then it has to be examined in the present suit, and then res judicata will apply. And if the parties do not cooperate, if they do not lead evidences and they do not do arguments, then how will the court decide upon the title and matter in issue and everything? And therefore theoretically you can always say the court can suo motu. Theoretically you can always say the court can suo motu raise the plea of res judicata on its own, because court knows कि अगर मैंने डिग्री पास कर दी then it would be void. But practically it is not possible for the court to raise the plea of res judicata itself, because first of all it will not be not knowing that the suit has been already decided, and secondly it will not be possible for the court on its own to examine all the elements of section 11 unless the party has led the evidences in that case, and therefore it is for the parties to raise the objection. So PT में आएगा तो आप लिख सकते हो, तो मान लो उसी कोर्ट ने उस सूट को पहले डिसाइड किया था और उसको उस सूट का डिटेल्स पता है. अब उसी कोर्ट में दोबारा सूट आ गया. मे बी इन दैट कोर्ट द कोर्ट इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. अब मान लो मेरे और आपके बीच सूट है. अब द कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट टुडे. अब 2-4 महीने के बाद में फिर से ही किसी ने उसी जज के पास सूट कर दिया, तो वहाँ पे द कोर्ट इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. अब द कोर्ट मे टेक अप द प्लीडिंग्स, लेकिन वहाँ पर प्ली रेज करने के बाद भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द कोर्ट कैन डू दैट. उसके बाद भी द एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 11 हैज टू बी फुलफिल्ड, और जब तक आप वो एलिमेंट्स प्रूव नहीं करोगे रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई. तो प्रैक्टिकली सुओ मोटो टेकिंग ऑफ द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट. अब पीटी में आप कह सकते हो यस, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस दे हैड गिवन. सो फॉर दिस कैन द कोर्ट्स टेक द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा सुओ मोटो. तो एक फ्लैट आंसर के तौर पे आप कह सकते हो यस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट को ये पावर होता है
लेकिन जब मेंस में पूछेंगे तो देन द आंसर ऑलवेज बी एक्सप्लेनेटरी, because practically it is not possible for the court to take the plea of res judicata, because first of all the court will not be aware, and secondly even it is aware, the elements of section 11 has to be fulfilled. So is that fine? तो इसको लिख लेना आप. Now write down the other question. What is the nature of decree if the court passes the decree in the violation of res judicata? So write the answer. If the trial court, if the if in the trial court, if in the trial court res judicata has been proved, and still the court conducts the trial and passes the decree will be void. So the decree will be void if the in the trial court res judicata has been proved and still the court conducts the trial and passes the decree, then the decree will be void. Now, suppose there is a trial between A and B, and somewhere in the trial, somewhere here res judicata is proved, but still the court went on trial and passes the decree. Then this decree will be void. But suppose defendant ने res judicata का objection उठाया नहीं. Suppose the defendant does not raise the objection of res judicata. Suppose A file a suit against B. Then suit was go on and B does not raise the plea of res judicata and the decree was passed. So plea was not raised of res judicata, then decree was passed. Then what? The decree will be valid. Later on B filed the suit for same matter. Now here when A raises the plea of res judicata, ये डिक्री ऑलरेडी हो चुका है, तो अब प्ली ऑफ रेज जुडिकाटा मीन्स ये सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है एंड देयरफॉर नाउ द सूट कैन नॉट बी ट्राइड अगेन. और बी का ऑब्जेक्शन है कि पहले भी एक डिक्री डिसाइड हुआ था और उसका रेज जुडिकाटा इस पे लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा. बी रेजेस द प्ली इन द लास्ट सूट that in the last suit the res judicata should be applied, but it was not applied. Will the objection of B be sustained? बताइए. देखो द पॉइंट इज, मान लो एक सूट डिसाइड हुआ जिसमें कि डिफेंडेंट कुड रेज द प्ली ऑफ रेज जुडिकाटा बट ही डिड नॉट रेज. डिफेंडेंट वाज एक्सपेक्टेड टू रेज द प्ली ऑफ रेज जुडिकाटा बट ही डज नॉट रेज. मीन्स व्हाट? कि ट्रायल में रेज जुडिकाटा प्रूव नहीं हुआ. इन द ट्रायल रेज जुडिकाटा वाज नॉट प्रूव्ड एंड देयरफॉर द डिक्री विल बी वैलिड. डिक्री वॉइड तब होगा जब रेज जुडिकाटा प्रूव होने के बाद भी कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया, देन द डिक्री विल बी वॉइड. बट हियर सिंस द रेज जुडिकाटा हैज नॉट बीन प्रूव्ड बिकॉज इट वाज नॉट रेज, सो डिक्री इज वैलिड. अब सपोज अनदर सूट इज filed and in the subsequent suit the plea of res judicata is raised. In the subsequent suit the plea of res judicata is raised. So here parties ought to raise the plea of res judicata in the former suit, but he did not raise it. Now he is raising in the subsequent suit. Here the doctrine of estopple will apply. The doctrine of estopple will apply because the rule is the person who is sleeping upon his rights, उसको law support नहीं करेगा. Because if you wanted you can raise the plea in the former suit, which he did not, and therefore he cannot be heard now. तो इसको लिख लीजिए आप, लिख लो इसको right. If the defendant does not raise the plea of res judicata and therefore res judicata was not proved, then the decree will be valid. And subsequently the erring party मतलब जिसने गलती की थी, जिसने रेज जुडिकाटा का प्ली नहीं उठाया था, subsequently the erring party will not be allowed to raise the plea, and subsequently the erring party will not be allowed to raise the plea. ठीक. पर इस डिक्री के खिलाफ आप अपील में जा सकते हो. डिक्री हो गई, आप अपील में जा सकते थे वहां, और वहां पर आप
रेस जुडिकाटा का प्ली रेज कर सकते थे, और वहाँ पे भी कोर्ट ये नोटिस करेगी कि दैट यू शुड हैव टू बी raise your preliminary objection at the earliest possible, but if you give the sufficient reason that due to that reason I have not raised the plea, I was unable, then the appellate court may allow, and then on that ground the appellate court may set aside the decree. लेकिन डिक्री अगर हो गई है और आप अपील में नहीं गए और बाद में दोबारा सूट कर देते हो आप, देन द प्ली विल नॉट बी अलाउड। ठीक, अब इसमें एक और पॉइंट समझिएगा आप। मान लो ए ने सूट किया बी के खिलाफ पहले, एंड द सूट वाज डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स। अब ए ने दोबारा सूट किया बी के खिलाफ। अब यहाँ पर बी को रेस जुडिकाटा का प्ली उठाना चाहिए था, बिकॉज सेम सूट हैज बीन डिसाइडेड, लेकिन बी ने रेस जुडिकाटा का प्ली नहीं उठाया, एंड ए ऑब्टेन्ड द डिक्री, फाइनल डिक्री। अब दो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट है। इन द फॉर्मर सूट the suit was dismissed on merits, and in the subsequent suit A has obtained the decree in his favor because B has not raised the plea of res judicata. अब दो डिक्री होंगी, one decree is against A, that is decree 1, and decree 2 is in favor of A, and the mistake was B has not raised the plea of res judicata, क्योंकि अगर B ने res judicata का plea लिया होता then the first degree would be final and this suit could not have been tried. अब इसमें which decree will be applied? दो opposite decree हैं, and second suit was decided because res judicata का plea was not raised. now देखो, the court's tilt was always towards the second decree because the party himself will not raise the plea of res judicata and he has allowed the second suit to be decided. Therefore the tilt of the court will be towards second degree. लेकिन तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा, लेकिन मान लो कि सेकंड वाले सूट में रेस जुडिकाटा का प्ली इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ए ने उसके साथ कुछ फ्रॉड किया था, बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग फाउल प्ले वाज डन बाय ए, बी कुड नॉट रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा, कुछ फॉल्स प्रॉमिस किया था व्हाटएवर. So in that case, the court will always allow the first decree to be executed. But in general case, it would always be that second decree has to be executed. ठीक. So right, if there are two decrees, there's one former decree, one former decree, and the other is subsequent decree. One former decree and the other subsequent decree wherein the plea of res judicata was not raised, then the tilt of the court will be that the subsequent decree will be applicable, but if it can be proved that the defendant did not raise the plea of res judicata, in the subsequent suit because of some foul play by the plaintiff, then the first decree will be applicable. Now the next question is, can a party waive his right to the plea of res judicata? Can a party waive his right to the plea of res judicata? अब can a party waive his rights to the plea of res judicata? तो waiver तो possible नहीं होगा क्योंकि res judicata is having a public policy, तो waiver तो possible नहीं होगा. मान लो पहले तो डिफेंडेंट ने रेस जुडिकाटा का प्ली उठाया, बाद में वो प्रूव भी हो गया, रेस जुडिकाटा प्रूव हो गया, और अब वो बाद में कहता है कि नहीं मुझे रेस जुडिकाटा नहीं लगाना, देन विल इट बी अलाउड? अगर डिफेंडेंट बोले कि मुझे रेस जुडिकाटा नहीं लगाना, दोबारा केस डालो, देन विल इट बी अलाउड? तो प्रूव होने के बाद डिफेंडेंट अगर बोलता है कि इसे हटा लो, देन ही हैज नॉट बीन अलाउड. It is a matter of public policy, it is totally injustice, and therefore waiver will not be allowed. But waiver इस तरीके से हो सकता है कि डिफेंडेंट ने
प्ली रेज ही नहीं किया। So that can waiver is possible if he has not raised the plea of res judicata. But if he has raised the plea of res judicata and res judicata is proved, then after that he cannot say that forgive the plaintiff or whatever, or I do not want the res judicata to apply. अगर उसने raise नहीं किया plea, then it is his discretion. Then the court will go on with the trial. तो इसको लिख लीजिए, write down. तो अगर रेज नहीं करता है प्ली, देन इट इज हिज डिस्क्रिशन, देन द कोर्ट विल गो ahead विद द ट्रायल। तो अगर कोई दूसरा सूट करता है उसमें रेज नहीं करता है, देन ऑल्सो द कोर्ट विल गो विद द ट्रायल। मान लो एक सूट हुआ, डिसाइड हो गया, उसके बाद दूसरा सूट हुआ, उसमें रेज जुडिकाटा प्ली कर दिया, रेज कर दिया, अप्रूव हो गया, रेज जुडिकाटा लग गया। अब तीसरा सूट कर दिया उसने, उसमें रेज जुडिकाटा प्ली नहीं लिया, ट्रायल चला, देन इट इज हिज डिस्क्रिशन, कोर्ट ट्रायल करेगी। लिख लीजिए इसको, राइट डाउन। रेज जुडिकाटा इज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। Res judicata is a matter of public policy and based upon the principles of equity and justice. Therefore, a party cannot waive his claim of res judicata after it has been proved, but the waiver can be done by the party impliedly by not raising the plea of res judicata at all. Impliedly by the party by not raising the plea of res judicata at all. तो आपने res judicata का plea नहीं उठाया, so that kind waiver you can say. बट अगर रेज जुडिकाटा का प्ली उठा लिया और रेज जुडिकाटा प्रूव हो गया और अब आप कहते हो कि मुझे रेज जुडिकाटा नहीं लगाना, आप दोबारा ट्राई करो, तो दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टी, क्योंकि जैसे ही रेज जुडिकाटा प्रूव हुआ द कोर्ट बिकम्स इनकम्पिटेंट पर से, और कोर्ट की इनकम्पिटेंसी को कम्पिटेंसी में बदलने की पावर पार्टी के पास नहीं है। सिंस द कोर्ट बिकम इनकम्पिटेंट पर से, it cannot in any case file a suit. It cannot try the suit, and that decree will be void if it tried then also. So PT के लिए भी अगर क्वेश्चन आए कि राइज जुडिकाटा का प्ली वेव हो सकता है कि नहीं, क्या राइट टू प्ली ऑफ राइज जुडिकाटा को वेव कर सकते हैं कि नहीं? आंसर इज नो। ठीक, अब नेक्स्ट देखो आप, पॉलिसी ऑफ रेज जुडिकाटा। पॉलिसी ऑफ रेज जुडिकाटा, तो इस पे लिख लो आप, पॉलिसी ऑफ रेज जुडिकाटा। इट इज बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। द पर्पज इज टू ब्रिंग अबाउट द सर्टेनिटी इन लीगल रिलेशंस एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब कुछ मैगजिम्स हैं इसमें, आप लिख लो। तो फर्स्ट मैगजिम लिख लो आप, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सेट फिनिश लिटियम। इसकी मीनिंग लिख लो आप, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू ब्रिंग एन एंड टू अ लिटिगेशन, टू ब्रिंग एन एंड टू लिटिगेशन, टू ब्रिंग एन एंड टू लिटिगेशन। देन उसके बाद एक और लिखो, एक्सेप्शियो रेज जुडिकाटे, एक्सेप्शियो रेज जुडिकाटे। इसमें लिखो मीनिंग, a previous judgment will bar any subsequent suit, a previous judgment will bar any subsequent suit। और इसके बाद एक और लिखिए, नेमो डेबिट बिस वैक्सारी प्रो उना एट एडम कौजा। मीनिंग लिखो, नो पर्सन शैल बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, मतलब एक ही व्यक्ति को बार बार परेशान करना। नो पर्सन शैल बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। नेक्स्ट लिखो आप, रेज जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑसिपिटर। मीनिंग लिखो इसका, जुडिशियल डिसीजन शैल बी एक्सेप्टेड एज फाइनल एंड करेक्ट। So this principle is basically related to public policy also and private policy also. The rights between individuals once settled, it should be settled for all, forever. And public policy is लीगल रिलेशनशिप में सर्टेनिटी होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी लेफ्ट विद अनसर्टेनिटी कि आज डिसीजन हो गया दोबारा भी ट्रायल होगा।
So these are the four maxims that you have to know. ठीक, अब now next is res judicata and inconsistent pleadings. ये actually constructive res judicata से related है, res judicata and inconsistent pleadings. अब इसमें एक एग्जांपल लो, suppose A had tried a suit against B. अब is it not that it is the duty of A to raise all the matters in issue in the same suit? एक matter in issue है, then A is duty bound to raise all the issues, and that is where we say if you might, you ought to have to raise the issues. You might and ought to have raised the issues. So it is the duty of A to raise all the matters directly and substantially in issue in the suit. मान लो उसने 2 इश्यूज रेज किए लेकिन तीसरा इशू नहीं रेज किया। अब कल को दोबारा ए और बी के बीच में सूट हुआ, उसमें ये तीसरा इशू रेज करता है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा लगेगा कि नहीं? इसी पे तो लगता है कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा। तो सपोज he knows that I got a will in my favor, then he also knows that I got the property intestate of succession, और उसको ये भी पता है कि मेरे नाम पे एक गिफ्ट है, तो उसी प्रॉपर्टी के लिए विल भी है, इंटेस्टेट सक्सेशन भी है और गिफ्ट भी है। अब इसमें he has raised the point of will and intestate succession, but gift वाला point he has not raised. और ट्रायल में he could not prove the will and intestate succession and therefore the suit is dismissed. अब he again filed a suit and this time he claims that I have also got a gift deed in my favor. अब बताइए, will you apply constructive res judicata? Yes, provided it is proved that at the time when the former suit was filed, he is having the knowledge of the gift, therefore he could have raised, he might have raised, then obviously he is having the duty to raise and he ought to have raised the plea, and despite that he did not raise, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा। ठीक, तो यही है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स का कॉन्सेप्ट ये है, मान लो ये 3 चीज थी इसके पास, विल, इंटेस्टेट सक्सेशन और गिफ्ट। जब कोई ऐसी बात है जो कि बिल्कुल अपोजिट है, जो दोनों चीजें सस्टेन नहीं कर सकती एक दूसरे से, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए ने एक मकान क्लेम किया बी से, ए इज क्लेमिंग अ पोजेशन ऑफ हाउस फ्रॉम बी एंड ही क्लेम्स दैट आई एम द लैंडलॉर्ड, he claims that I am the landlord and I am having a rent agreement. As per the agreement, rent agreement, time पूरा हो गया, so he has to evict the premises. तो ये क्लेम कर रहा है कि मैं मकान का मालिक हूँ और टर्म ऑफ लीज पूरा हो गया, therefore I want the eviction of the premises. Fine. अब बाद में वो कहता है, इस सूट के डिसाइड होने के बाद में वो कहता है that I am the tenant and B is the landlord. I am tenant and B is the landlord and he without any reason dispossessed me, so I want the possession of the house, therefore I want the possession of the house as a tenant. Now this plea that I am tenant and this plea that I am landlord, are these not just opposite pleadings? अब एक ही व्यक्ति एक सूट में कह रहा है कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ और दूसरे सूट में कह रहा है कि मैं टेनेंट हूँ, तो इज इट नॉट जस्ट अपोजिट प्ली? इफ यस, तो ये जो आपका टेनेंसी वाला प्ली है, क्योंकि ये जो टेनेंसी वाला प्ली है वो आप यहाँ पर रेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पर रेज करते आप तो ये दोनों प्ली म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो जाती एंड योर प्लीडिंग्स कुड हैव बीन कैंसल्ड। तो फिर उस सूट में सुनवाई नहीं हो सकती थी बिकॉज यू आर क्लेमिंग टू इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स। तो अब एक बार आपका ये लैंडलॉर्ड वाला डिसाइड हो गया, उसके बाद सपोज यू आर गो फॉर क्लेमिंग एज टेनेंट, तो हियर दिस प्लीडिंग यू आर मेकिंग, उस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा बिकॉज यू डिड नॉट हैव रेज्ड दिस प्लीडिंग इन द फॉर्मर सूट। दिस प्लीडिंग विच यू डिड नॉट रेज इन द फॉर्मर सूट because it was destructive of the other pleading, it was just opposite of the other pleading, so here you got one matter in issue, here you got another matter in issue,
if these two are inconsistent with each other in such a manner that these two will destroy each other. So it is destructive in such a manner it will these two destroy each other. तो फिर टोटली अपोजिट प्लीडिंग्स आप नहीं लोगे. हाँ, थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट होगा तो चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल इनकंसिस्टेंट, टोटली इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग आप करना चाहते हो, बिल्कुल अपोजिट मैटर्स इन इशू रेज करना चाहते हो. सो द inconsistency is to the extent of mutually destructive, and therefore if you have raised one of them today and subsequently you are raising the another, then constructive res judicata will not apply. तो इसको इसी एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो एक व्यक्ति के पास विल था, उसके पास इंटरस्टेट सक्सेशन में भी क्लेम है, उसके पास गिफ्ट भी है उसी प्रॉपर्टी में, और 12 साल से उसने एडवर्स पोजीशन भी ले रखा है, और वो कह रहा है कि 12 साल से मुझ पे एडवर्स पोजीशन भी है. अब ये 4 प्लीडिंग्स हैं उसके पास, 4 मैटर्स इन इशू हैं: विल, इंटरस्टेट सक्सेशन, गिफ्ट एंड एडवर्स पोजीशन. 12 ईयर से या उससे ज़्यादा से उसके पास पोजीशन है, एडवर्स पोजीशन. अब यहाँ पर विल, इंटरस्टेट सक्सेशन और गिफ्ट यहाँ पर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन ये जो एडवर्स पोजीशन है उसके साथ इनकंसिस्टेंसी है. अब ये बिल्कुल टोटली अपोजिट नहीं है, बट देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी. जिस मकान के लिए आप कह रहे हो कि तुमको इंटरस्टेट सक्सेशन में मिला, अब उसी मकान के लिए आप कह रहे हो कि मैं 12 साल से एडवर्स पोजीशन में था और मेरा टाइटल परफेक्ट हो गया. अब दीज टू प्लीडिंग्स आर नॉट टोटली इनकंसिस्टेंट. ऐसा हो सकता है that you do not know that the property belongs to your father and you have held the property against the wishes of some persons for 12 years and thereby you say that you have, or या फिर you do not know that this man is my father. For example, you did not know that this man is my father and you held the property adversely and now this man dies. अब इन द मीन टाइम 12 साल में एडवर्स पोजीशन में परफेक्शन भी हो गया, और अब उसके मरने पर सिंस यू आर थिंकिंग दैट ही वाज योर फादर, तो इंटरस्टेट सक्सेशन भी हो गया. अब ये दोनों सिचुएशन इनकंसिस्टेंट जरूर हैं, पर दोनों म्यूचुअल डिस्ट्रक्टिव नहीं है. तो टोटली म्यूचुअल डिस्ट्रक्टिव नहीं है क्योंकि ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं. लेकिन एक ही व्यक्ति एक मकान का लैंडलॉर्ड भी हो जाए और साथ में टेनेंट भी हो, तो ये इनकंसिस्टेंसी ऐसी है जो एक साथ सस्टेन नहीं करती. सो माइनर इनकंसिस्टेंसीज इन द मैटर इन इशू डज नॉट मैटर. यू शुड रेज ऑल द मैटर्स इन इशू इन द सेम सूट. बट इफ इनकंसिस्टेंसी इज टू द एक्सटेंट that if you raise both the matters in issue in the same suit, then they will become mutually destructive, then in that case you are free to raise only one of them and second one you can raise in the subsequent suit. And there if the question of constructive res judicata applies, then you can always say that the matter in issue in the former suit, otherwise also these two have inconsistent with each other. एंड देयरफॉर ऐसे केसेस में कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा नहीं लगेगा. तो इसको आप लिख लें, राइट डाउन. राइट, इफ देयर आर माइनर इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन टू मैटर्स इन इशू, then the pleading are not mutually destructive to each other and therefore all such pleadings raised in the same suit. If it was not raised in the same suit, then in the subsequent suit constructive res judicata will apply. However, if the matter in issue are such as they are inconsistent to the extent being mutually destructive, then the two cannot be raised in the same suit, and therefore if one of them is raised in a subsequent suit, constructive res judicata will not apply.
ठीक, अब एक पॉइंट और बचा है इसमें। कैन प्लेंटिफ हिमसेल्फ रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा? क्या प्लेंटिफ खुद ही प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा रेज कर सकता है? अब इसका जनरल आंसर तो होना चाहिए नो, क्योंकि प्लेंटिफ, मान लो प्लेंटिफ ने सूट किया और वो खुद ही कहता है कि दिस सूट इज बार्ड बाई रेस जुडिकाटा, तो ये कैसा प्लेंटिफ है? खुद ही सूट करता है और खुद ही कहता है कि दिस सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। तो सूट रेस जुडिकाटा का प्ली प्लेंटिफ की तरफ से नहीं हो सकता। वाई शुड ही रेज? बट इशू का रेस जुडिकाटा उठा सकता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप याद करिए, एक्सप्लेनेशन 8 वाला एक एग्जाम्पल था, डिवोर्स पिटीशन, या फिर एक मॉडल आंसर दिया था सी और डी वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर ए ने खुद दोबारा सूट किया और कहता है कि सी एंड डी आर इन पोजेशन, इस पॉइंट पर एस जुडिकाटा लगेगा। अब उसमें लगा नहीं था, बात अलग है, लेकिन अपलेट कोर्ट ने मेरिट्स पर डिसाइड किया होता सी और डी के लिए, तो उस पॉइंट पर एस जुडिकाटा लग जाता। सो प्लेंटिफ कैन रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा। अब अगर पीटी में पूछेंगे तो आंसर शुड बी यस, ही कैन रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा बट नॉट सूट का रेस जुडिकाटा, इशू का रेस जुडिकाटा। तो इसको लिख लीजिए आप, राइट। A plaintiff who files a suit in the court will not himself raise the plea of res judicata with respect to the suit as it will bar his own suit, but he can always raise the plea of issue res judicata upon some issue which has already been heard and finally decided in the former suit, which has already been heard and finally decided in some former suit. So by this I get over with the topic res judicata. अब इसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहो तो बुक्स में से देख लेना, otherwise these are sufficient. So in next lecture we would start with res sub judice. That's it for this lecture. Thank you.